Yes. Please बैठ के मनीला. Manila, introduce yourself. Good afternoon, sir. My name is Manila. I belong from Dhanbad district. As a person, I am very much positive, outgoing, and have a very optimistic approach towards my life. In work profile, I prefer perfection, and I think that I am a perfectionist, and strive to achieve that goal in my work profile. I have done my schooling from DAV Public School, Kathara, and then I pursued my BSc from Biotechnology from St. Xavier's College in 2013, and then I went for MBA in Agribusiness from Birsa Agricultural University and completed it in year 2015. Since then, I am preparing for my civil services examination, because in due course of my time of studies or my curricular activities, I was inclined towards civil services because I was engaged in such a course where I was related to agricultural development, and as it was a course of MBA management where I visited I visited various industrial sectors of farming sectors or industrial sectors related to food and processing, etc. And in the last year of my MBA, I went through a thesis program, a summer internship program offered by NABARD, where I surveyed 3 different blocks of 3 different districts, where I achieved various kind of surveys that were based on watershed management development, which were funded by NABARD under various NGOs. And I came across face-to-face, one-on-one interview with farmers, and I understood the grassroots level of farming sector or other developmental sectors, which inclined me more towards this service. Who is the founder of DAV, Manila? Dayanand sir, I'm sorry, sir. Founder. The founder of DAV Public School would be. It's okay. What is paid up capital of NABARD? Paid up capital. Recently in 2016, government has changed the paid up capital, increased paid up capital of NABARD. What is it? Sorry, I don't recall. It's okay. Mention 3 regions to develop Jharkhand's agriculture. Can you repeat the question? Mention 3 regions to develop Jharkhand's agriculture. Development of Jharkhand agriculture. Yes, sir. The development of Jharkhand agriculture mainly should be on the basis where we can say that Jharkhand agriculture is mostly marginalized and is divided in various. Kindly be specific. Only mention 3 regions. Okay. First, we can consolidate the scattered land and club the land all together and make it large, so that one can perform farming. Okay, tell me what are the problems of Jharkhand's agriculture? Jharkhand's agriculture problem would be first would be marginalized farming, subsistence farming, rain-fed agriculture. Fourth will be lack of monetary support or to the small sector of farmers, unconsolidated land. Last year there was prolonged agitation done by the farmers in UP, Western UP borders and in Punjab. Can you explain why was that agitation and what were the main demands of them? The cause of agitation was the 3 farm bills that were proposed by central government, and the farmers were not ready to accept this rapid change. Mainly the farmers who are the big players have large land holdings, or the farmers who are mainly the intermediaries who operate APMCs or mandis were agitated by the move, where the farmers were given right to sell their produces
or the output to any part of the country, or the mention of the third law where the contract farming was also mentioned in the third law, that agitated the large part of the farmers, and mostly the APMC mandi operators, the intermediaries, which can be said as adatyas of the Punjab sector. So the area was agitated. How is MSP of any farm product is decided? MSP of any farm product. So the MSP of any farm product is decided every year by Okay. Tell me about your hobbies. So my hobbies would be cooking. I fondly enjoy listening music and playing guitar, and third would be I love spending time with my elders. How will you play G major? G major. So can I explain with fret or string? Yeah, you can tell which fret and fingers will be there. Okay, sir. So the G major would be from top to bottom, the strings, the 6 strings which I record. You can say E, D, no problem. Okay, sir. So in second fret, we can G string, the E string, and and on fourth fret the fourth fret would be suspended. Okay. Why is cake so fluffy? What does make fluffy? So the use of baking soda or clubbed with baking powder makes it fluffy, where tartaric acid is also one of the main constituent of baking powder, which why is there any chemical reaction or what? Yes, so there is a chemical reaction which releases CO2 from the pores of cake, which makes it fluffy. Okay, so if CO2 is there, whether it will be harmful for any health or? No, sir. It is not harmful. The CO2 is released from the trapped part of the cake, which makes it spongy and fluffy. Okay. What is gluten-free diet? Gluten is a kind of a protein which is present in most of the food grains like wheat, barley, etc. So the food grains which do not possess this kind of gluten, the specific kind of protein is called gluten-free grains, and the example would be quinoa and sorry sir, I can recall. Okay. Tell me the districts which are in Kolhan Pramandal. Kolhan Pramandal. So the Kolhan Pramandal districts are. So sorry, I cannot recall it now. Okay. How many districts will be there in Santhal Pargana? In Santhal Pargana, sir, I can name them. Please kindly. So first would be Godda, Sahibganj, then Pakur, Dumka, Jamtara. Tell me 5 special things about your hometown. 5 special things about my hometown. So the first would be, it is a coal capital of India, and it has the major coal mines, Jharia, of India. And the second would be the Kalyaneshwari temple of Maithan, and third would be the Maithan Dam, which is famous for hydroelectricity power. Fourth would be the Bhatinda Fall, it is a major tourist place, and fifth I would suggest sorry sir, I cannot recall it. No problem. Having Maithan in our state and others hydroelectricity power also there, plants also there. So what do you think, whether we can cater the power of our state from these hydroelectricity plant or not, or if not, then whether we can increase the capacity of these hydroelectricity plants so that we can cater the whole state for power? So the main problem behind the
hydroelectricity power is that it requires a large infrastructure, which currently Maithan Dam is not capable of providing. A large infrastructure would be the number of turbines, the holding capacity of water, so and a large amount of capital infusion. And the running and the perennial river also plays a very much role in this case. Jharkhand being a state which has major rain-fed rivers, the cost of and the undulating topography of geographical topography of Jharkhand makes it nearly difficult to support the state via the construction of hydroelectricity power. And the perennial river is also the one of the absence of perennial river is also one of the cause. So the maximization would be would be not cost effective in this case. Who is the present speaker of our Vidhan Sabha? So sorry, I can. Okay. Thank you, Manila. आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं? यस यस। ठीक है ना? ऑनलाइन बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप दायां बायां ऊपर नीचे जहाँ जहाँ देख सकते हैं सब तरफ देख रही हैं। यस यस सर। ठीक है, ट्राई नॉट टू डू दैट। ठीक है, इतना नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। हड़बड़ा के क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट कर रही हैं समझने के लिए अपने नर्वसनेस में। कीजिए, दिमाग में कीजिए। ठीक है, नॉट मतलब ऐसे बोल के ना कीजिए कि जैसे आप बोले ओके डेवलपमेंट ऑफ झारखंड ओके, तो ये नहीं करना। आप मन में बोल लीजिए अच्छा ठीक है, तो फिर बोलिए। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप वैसे करेंगे, सामने वाले को समझ भी आ रहा है कि अच्छा वो मन में कर रहा है, तो आप स्ट्रेस हैं, दे विल गिव यू दैट मच लीवे कि आप स्ट्रेस हैं तो ऐसे बिहेव करेंगे। ठीक है ना? तो उतना नहीं सोचना है। आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। जैसे पता नहीं क्यों बट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गया। बट ऐसा है कि मेरा पिछले बार का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। हाँ। और इस बार पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस और डर लग रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। दो रीज़न से होता है कि आपको पता है कि पिछले बार आप इंटरव्यू लेवल तक आई थी, आपने एक अच्छा इंटरव्यू भी दिया था। इस बार भी आप इंटरव्यू लेवल से पे आई हैं और आप अच्छा देंगी, मार्क्स भी अच्छा आएंगे। आप बस डर रही हैं कि जितना जो आपने मेहनत करा है कि फिर कहीं सारी चीज़ें फिर से वो नहीं हो जाए। तो अल्टीमेटली यू हैव टू फेस इट। अब जब फेस करना है तो इन अ बोल्ड मैनर यू शुड डू इट। ठीक है, तो यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड। ठीक है, लेकिन आप जो नर्वस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रही हैं, उसकी वजह से आप फ्लुएंट नहीं हो पा रही हैं। चीज़ें नहीं जानना अलग चीज़ है, लेकिन जो जान रहे हैं उनके बारे में बता पाना एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं जान रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप हैं तो फ्लुएंट होइए। आप अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बोल रही हैं फ्लुएंट। हाँ, इंट्रोडक्शन तो आप तैयार करके आई हैं ना। इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए बढ़िया से। एक दो पॉइंट हो सकता है कि नर्वसनेस से भूल पाएँ, लेकिन जैसे तीसरा चौथा स्टेटमेंट आया तो फिर आपका फ्लो पकड़ाना चाहिए। होता है, मान लीजिए नर्वसनेस में पहला बीच सेकंड लाइन जो था मैंने भी छोड़ दिया था, थर्ड स्टेटमेंट आया, लेकिन जैसे चौथा पांचवा लाइन आया तो फिर वो फ्लो पकड़ा जाता है कि आपने तैयारी करी है। आपका वो पूरे ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन था उस सब चीज़ में सोच दिख रहा था। ठीक है ना? उसको थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत कीजिए। आप जब बता रही हैं कि आप नाबार्ड आपको ये किया था, आपने उसमें ट्रेनिंग करी थी या जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? नाबार्ड का रोल क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, कैसे करता है, हमारे स्टेट में नाबार्ड क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है या फिर उसका क्यों नहीं धरातल पे कुछ दिख रहा है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसलिए छूट गए कि इतना ज़्यादा नर्वसनेस हो गया कि पता है कि जो आप धनबाद से रह रही हैं और आप धनबाद के बारे में नहीं बता पा रही हैं 5 चीज़। यस सर, हम 100 चीज़ बता देंगे। आपसे कहीं ये नहीं बोला है कि एकदम ऊपर कहीं कुछ ऐसा बताइए। आप कुछ भी बताइए, NH2 पे है, वहाँ पे इतने सारे ये हैं, मॉल्स हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, धूल बहुत उड़ती है इधर पे। कुछ भी बताइए। आपको तो 5 चीज़ बताने बोला गया है ना, कुछ भी बताइए। मेरा घर है वहाँ पे, क्या दिक्कत है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बोलने के लिए, लेकिन 4 ही आप 5 बोल नहीं पा रहे, इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ।
ठीक है ना। Yes, sir. आपको तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है कि जो आते हुए हैं भी, इकोनॉमिक एडवाइजरी जो है वो जादू हाँ। करती है एमएसपी, वो भी मैं मतलब मुझे पता है, बट मैं वो तब बोले कोल्हान वाला रीजन मैंने मुझे एमएसपी पता है, इसलिए बट मैं पूछा वो क्योंकि एमएसपी एक मेजर रीज़न था उस एजुटेशन के लिए। उसमें था कि उनको लग रहा था एमएसपी हटा दी गई है, वो लोग का डिमांड था कि एमएसपी रखी जाए, जिस पे कि गवर्नमेंट ने बोला कि एमएसपी तो है ही भाई, हम लोग लिखित में देने को तैयार हैं कि एमएसपी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम हटा नहीं रहे। आपने वो पॉइंट मिस करा, इसलिए मैंने फिर पूछा कि एमएसपी क्यों बनता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल बहुत नर्वस हैं आप, थोड़ा सा और प्रिपेयर कीजिए। कम से कम जैसे मैंने बताया कि 30-40 सेकंड के सारे आंसर्स बनाइए, सो दैट कि आपको आसानी हो। ऐसा नर्वसनेस रहेगा तो कुछ क्वेश्चंस जो आपके रडार में जैसे आएंगे तो आपको वहाँ पे फ्लुएंसी दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है।